we have seen the process of absorption. What do you mean by absorption? What is passive diffusion? What is facilitated diffusion? What is active transport? What is pinocytosis, phagocytosis, etc., etc. The remaining part in continuation with that, we have also seen this. We have already completed this part, but this was not recorded, so that's why I am going to repeat it so that it will be available in a recorded form also. So drug absorption or drug permeation. Drug permeation, or it is also known as a deposition of drug, biodeposition. So drug permeation or kinetics, that is ADME. Okay, drug permeation, ADME, biodeposition in the wall, in the body, or in the wall of absorption site, or permeation of drug across the cellular biological membrane. So it is dependent on different factors. It is different factors depend on. There are numerous factors. We have seen it. So first one is the solubility. Okay, a drug must be lipid soluble. If ability to cross a membrane, ability of drug to cross a membrane depends on its solubility, particularly lipid solubility. To cross a biological membrane, drug must be lipid soluble and it should be in a unionized form. So unionized lipid soluble drugs, they are rapidly absorbed. That doesn't mean that water soluble molecule will not absorb. They are also going to absorb, but low molecular weight water soluble compounds, they are absorbed through aqueous pores. We have seen this. I'm just going to repeat it. That's why I'm going to take very fast. Then we have seen the concentration gradient. So for the absorption of drug, there must exist a concentration gradient. Okay, higher will be the difference in the concentration on both sides. So more will be the absorption. So higher degree of difference in the concentration of drug across the both side of membrane, faster will be the absorption. Okay, and only free form of drug will be absorbed. So if your drug is in a bound form, or if it is a bound, or it bounds to a your GIT tissue, or if it is in a complex formation, so it will not absorb. अगर आपका ड्रग फ्री फॉर्म में है तो ये एब्सॉर्ब होगा. अगर उसने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, या फिर या फिर आपका ड्रग कोई बाउंड हो चुका है आपके टिश्यू को, सो दैट विल नॉट बी एब्सॉर्ब. सो फॉर एब्सॉर्प्शन drug should be lipid soluble, unionized, and it should be in a free form. There should be a high difference in the concentration gradient across the cell membrane. Then again, for the absorption, so more will be the surface area of absorbing tissue, more will be the surface area area of absorbing tissue, higher will be the absorption. Again, more will be the blood vessels supplied to the absorbing tissue, more will be the absorption. So surface area and vascularity are, they are directly proportional to the absorption. Then again, ionization, we have seen this. So ionized molecule, they are not well absorbed. So unionized molecule will be absorbed faster, because ionized molecule will have a water solubility, and unionized molecule will have a lipid solubility. Okay, so most of the drug are either weak acid or weak bases. You know that most of the drugs are जो भी drugs लेते हैं, so most of the drugs are weak acid or weak base, and their ionization and non-ionization means they exist in either ionized form or unionized form. Both these weak acid and weak bases, most of the drugs are weak acid weak bases, they will exist in either ionized or unionized form. And now this ionization or unionization depends on the three things. First one is the pH of surrounding medium or pH of GIT or gut, then pKa of the drug. Okay, pKa of the drug. So depends on the pH and pKa of the drug. Unionized form of drug, unionized form of drug only can cross the biological membrane because it is a more lipid soluble in nature. So unionized form of drug will be easily absorbable. It can easily absorb because it is a lipid soluble in nature. Ionization or unionization, percentage ionization depends on the two factors. That is, the first one is a pKa and second one is a pH of surrounding medium or gut. Now most of the drugs are either weak acid or weak bases, you know that. Now for weak acid, so weak acids, they are mostly absorbed from the acidic medium, and weak bases, they are absorbed from the basic medium. Now आपके जो GIT है, your GIT has a two environment. First one is your stomach will have a acidic pH, that is pH is less than pKa. Okay, so acidic environment or acid medium, it occurs in the stomach. Now pH is less than pKa in the stomach, and in the intestine there is a basic medium where pH is more than, okay, so pH is more than pKa at the basic medium.
Okay, now there are two kind of drug, weak acid or weak bases. Now weak acid, when they will go in the acid environment in the stomach, as there is an acid environment in the stomach, so weak acid will remain in a unionized form. यहाँ पे weak acid unionized रहेगा और उनका absorption ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है वहाँ से. So that's why weak acid will remain unionized in acidic pH and absorption occurs over there. Okay, now if that weak acid goes into basic medium, so it will get ionized, and you know that ionized drug will not cross the biological membrane. So weak acids will absorb from the stomach. Now weak bases, so weak base, it will get ionized in case of acidic pH in the stomach. So that's why it cannot cross or it cannot absorb from the stomach. When it reach to your intestine, where there is a basic pH, and it will remain unionized. Now it can cross the membrane. Okay, so acidic drug, remember acidic drug, weak acidic drug, they used to absorb from the stomach itself, and weak basic drug they used to absorb from the intestine, because of the environment. Okay, so weak acid will remain unionized in case of acidic environment, and weak bases will remain unionized in case of basic environment. So that's why now percentage ionization is a function of your pH and pKa of drug, pH of environment and pKa of drug. So it is given by one equation known as Henderson-Hasselbalch equation, and it is nothing but the, for weak acid it is a pH minus pKa is equal to log of unionized fraction divided by ionized fraction of drug. Then for weak bases it is pH minus pKa is equal to log of ionized fraction of drug divided by unionized. It is just opposite. ठीक है, बेस के लिए क्या है, वीक बेस के लिए, वीक एसिड के लिए क्या है, याद रखना है. Now we have seen this already, just it was not recorded, so that's why I am going to take it again. So percentage ionization or non-ionization of the drug is a function of pH of medium and pKa of drug. Okay, so there is a general assumption or table given by various experiment. ठीक है, so pH minus pK value आपको क्या करना है, you have to remember the pH minus pK value, or you have to recall this table. They might ask you question regarding calculate the percentage ionization of drug, calculate the percentage unionized drug, percentage ionized or percentage unionized. They will give you the pKa of the drug, they will give you the environment of either pH of blood or pH of urine, and they will ask you calculate the percentage ionization or percentage unionized form. So there is no need to do any calculation, you just remember this table, you can easily find out the answer. Okay, so in that case you have to do one thing first, you have to minus your pKa from pH. So pH minus pKa, क्या करना है आपको, pKa जो है वो pH से माइनस करना है और उसका वैल्यू निकालना है कितना आता है. So most of the time the pH minus pKa value is in a range of 0 to 2, 0 to 2. So -2 -1 0 +1 +2, ये चार वैल्यू आएंगे आपके pH माइनस pKa के कितने वैल्यू आएंगे, चार, -2 -1 0 +1 +2. Now in case of weak acids, अगर आपका ड्रग weak acid है, so if weak acid, so pH minus pKa comes -2 value, then 99% of weak acid is unionized and 1% is ionized. Okay, now if pH minus pKa comes -1 for weak acid, then that means 90% of your weak acid is unionized and 10% of drug is ionized. Okay, if pH minus pKa comes 0, that means 50% drug is unionized, 50% drug is ionized. If pH minus pKa comes positive 1 +1, that means 10% of drug is unionized, that means 90% of drug is ionized. Okay, if pH minus pKa comes +2, that means only 1% of drug is unionized and 99% drug is ionized. अगर आपको एक भी मालूम हो गया, okay, if you know how many percent of drug is unionized, so remaining is ionized. For weak base, if pH minus pKa comes -2, then 1% of drug is unionized, that means 99% drug is ionized. Okay, for weak base pH minus pKa comes -1, that means 10% of drug is unionized, 90% drug is ionized. For weak bases pH minus pKa value comes 0, that means 50% of weak base is unionized and 50% of weak base is ionized. So if pH minus pKa comes +1, that means 90% of your weak base is unionized and 10% of your weak base basic drug is ionized.
if pH minus pK value comes +2, that means 99% of your base or weak basic drug, that is a 99% unionized and 1% ionized. Suppose that you have asked one question. They might have asked question like this: if pKa of morphine is 8, calculate the percentage of ionized drug or ionized form of drug in urine at pH 6.0. So you just have to do one thing, just minus pH minus pKa, just subtract. So there you will get a one value. Okay, just correlate that value with your table. That's it. You can easily find the answer. Likewise here example is given. यहाँ पे example दिया है. So they might ask you a question like this: if pKa value of morphine is 8, calculate the percentage of ionized form of drug in urine at pH 6. pH minus pKa कितना आएगा आपका? pH 6 से pKa 8 है. So pH minus pKa 6 minus 8 minus 2 आएगा. pH minus pKa. So minus 2 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे आपको क्या है, मॉर्फिन पूछा है. मॉर्फिन, व्हाट इज मॉर्फिन? मॉर्फिन इज अ वीक बेस. ठीक है, मॉर्फिन क्या है? वीक बेस. वीक बेस का वैल्यू कितना है आपको pH माइनस पीके का? -2. तो ये किसके लिए? पहला और सेकंड रो किसके लिए? वीक एसिड के लिए. ये थर्ड रो किसके लिए है आपकी? वीक बेस के लिए. तो यहाँ पे कितना है? -2 आया. मतलब वीक बेस क्या है? 1% अनआयोनाइज्ड है, 99% आयोनाइज्ड है. ठीक है. सो pH minus pK for morphine comes -2. Okay, so here is -2, but morphine is a weak base, so you have to go in this table. Okay, so it comes 1. 1 means 1% will be unionized and 99% will be ionized. Okay, so it will be 1% ionized and 99%, 1% unionized and 99% ionized. So you can calculate in this manner. Okay, another example is there. So if they have given like this: if the pKa of acetyl salicylic acid is 3.5, calculate the percentage of drug absorbed through stomach having pH 1.5. Absorbed through stomach मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म पूछा है. ठीक है. So you just have to do pH minus pKa. 1.5 minus 3.5. So it will come -2 again. Now what is acetyl salicylic acid? It is a weak acid now. Okay. Now just correlate -2. Okay, -2. यहाँ पे आया -2. weak acid है तो ये आएगा. So 99% drug will be unionized form and 10% drug will be 1% drug will be ionized. So 99% will be unionized. Okay. So that will be absorbed. So that's why you can easily calculate such kind of questions if they ask any such kind of questions in GPAT as well as other exam. अगर GPAT में पूछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ये टेबल याद करना है. ठीक है, टेबल याद करना है. इजीली है, इजी है, बहुत इजी टेबल याद करना. आप खुद भी टेबल ये बना सकते हो एनी टाइम. ठीक है, pH माइनस पीके का वैल्यू लिखो इसमें, और इसमें 4 कितना वैल्यू आएगा आपका? 5 वैल्यू आएगा. ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 0. 0 में क्या होता है कि 50% होता है. 50% आयोनाइज होता है, 50% अनआयोनाइज होता है. ठीक है, आप सिर्फ अनआयोनाइज के बारे में याद रखो. अगर pH माइनस पीके का वैल्यू अगर 1 आ गया, 0 आ गया, उसका मतलब ये है कि 50% अनआयोनाइज्ड ड्रग है, 50% आयोनाइज्ड है. ठीक है. उसका कितना वैल्यू आएगा? दो ही वैल्यू है, 1 एंड 2. ठीक है, 0 1 एंड 2. 0 मतलब 50 1 एंड 2. अगर 1 प्लस में भी आता है, माइनस में भी आता है. सो 0 + 1 + 2, 0 -1 -2. पहले में वीक एसिड आएगा. वीक एसिड में -2 वैल्यू आ गया तो 99% अनआयोनाइज्ड होता है. अगर -1 वैल्यू आ गया तो 90% अनआयोनाइज्ड होता है. अगर 0 आया तो 50% आता है अनआयोनाइज्ड. अगर 1 आ गया तो 10%, 2 आ गया तो 1%. इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द बेस. अगर बेस का pH माइनस पीके वैल्यू आ गया आपका, ये pH माइनस पीके कहाँ का है? ये देखो, ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछाएगा कि पीके वैल्यू ऑफ मॉर्फिन इज, तो ये मॉर्फिन का पीके. और pH कहाँ का? जो सराउंडिंग मीडियम, जैसे यूरिन है यहाँ पे क्या है? जैसे स्टमक है, तो सराउंडिंग मीडियम का pH. pH माइनस पीके का वैल्यू कैलकुलेट करो पहले और कोरिलेट करो टेबल्स के. ओके, सो यू विल गेट द फाइंड द आंसर. यू विल इजीली फाइंड द आंसर. Now next is ionization of drug decreases the absorption while increases the renal clearance. So I have already told you, for the absorption of drug, a drug need to be lipid soluble and unionized, and for elimination it needs to be water soluble ionized. Okay, so that's why ionization of drug decreases the absorption and increases the renal clearance of drug. Okay, now free unbound drug is filtrated. जो
elimination होगा ड्रग का जब, so for filtration through kidney drug should be free form, it should be a free form. So free and unbound drug is only filtrated. Both ionized and unionized form of drug it can be filtrated, but both forms should be water soluble. Okay, now only unionized form of drug will be actively secreted. Okay, or passive reabsorption. And for passive reabsorption or active secretion in the kidney, a drug should be in an unionized form. Ionized form of drug are trapped in a filtrate. Ionized form of drug is trapped in a filtrate. So we have seen this just. So why it is important? It is important to know. It is important. pH and pKa relationship of a drug is important to adjust the dose. It is also important in case of toxicity. अगर आपको कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया या फिर टॉक्सिसिटी हो गई, so in that case you can easily eliminate the drug by adjusting the pH of urine. Okay, so suppose that आपको अगर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का टॉक्सिसिटी हो गया या फिर ओवरडोज हो गया, so what you have to do in that case, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड is a weak acid, so it can be easily eliminated by अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन. कि यूरिन का पीएच आप बढ़ा दो, आपका जो भी एसिडिक ड्रग है वो निकल जाएगा. अगर बेसिक ड्रग का पॉइजनिंग हुआ है तो यूरिन का पीएच एसिडिक करो, आपका ड्रग निकल जाएगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल यू कैन use this you can apply this Anderson SLPC equation, or by using this kind of relationship you can eliminate the drug from body. Okay, so for example suppose that आपको क्या हुआ है कि मॉर्फिन का पॉइजनिंग हुआ है, so morphine is nothing but the weak base. Suppose that you have overdose of morphine, so you want to remove morphine from your body, so what you will do, you have to acidify your urine, because morphine is a weak base, and in acidic medium it will get ionized, and ionized form is water soluble, so that's why. Okay, so morphine का अगर poisoning होगा तो acidify करो आपकी urine को, so you can acidify your urine by using ammonium chloride or vitamin C. Okay, so ionization of urine or acidification of urine will increase the elimination of weak bases. In the similar fashion, alkalization of urine will increase the elimination of your acids. Okay, alkalization of urine will increase the elimination of your acid, right? Are you getting or not? समझ रहे हैं? So alkalization, how you can increase the pH of urine by using urinary alkalizer like sodium bicarbonate, acetazolamide. So sodium bicarbonate देंगे, acetazolamide देंगे, तो यूरिन का pH क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, अल्कली साइड पे जाएगा. So acidic drug will get ionized in that pH, and that's why it can be easily removed. So if you got a toxicity or overdose of acidic drug, weak acidic drug, जैसे for example barbituric acid or barbiturates and acyl salicylic acid. So poisoning of barbiturates, it is indicated in the poisoning of barbiturate you must alkalize your urine so that the drug will be easily removed from your body. So alkalization of urine, acidification of urine, this is important, they can ask the question. Then we have seen the absorption process. Okay, there are different there are different mechanism for absorption: passive diffusion, facilitated diffusion, active transport. We have already seen in the previous lecture. Just a summary. So in case of passive diffusion, there is no energy required and no carrier is required. In case of passive, okay, no energy required, no carrier is required in case of passive diffusion, and it is a down gradient. डाउन ग्रेडियंट मतलब क्या, एक साइड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, एक साइड पे कम है, तो ऑटोमेटिकली the molecules will move from higher concentration to lower concentration. It is known as a down gradient. Okay, or it is known as a downhill process. Then in case of facilitated diffusion, you don't require any kind of energy over there, but you need a carrier protein. Okay, and again this facilitated diffusion also a downgrade or downhill process. Okay, and this is saturable. Okay, because there is a carrier. Okay, in case of active transport, again in case of active transport you need energy, and carrier is also required, and it is against the concentration gradient or electrochemical gradient. So here it is a up gradient or it is a uphill process. Okay, again it is a saturable. So जो भी प्रोसेस में कैरियर आएगा एब्सॉर्प्शन की, तो वो प्रोसेस है आपका सैचुरेबल. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ, देखो सैचुरेबल मतलब क्या कि नंबर ऑफ कैरियर्स कितने होंगे, लिमिटेड होंगे. फॉर एग्जांपल इफ योर नंबर ऑफ कैरियर्स आर 100,
So 100 molecules of drug or any chemical that will they will carry over. But if अगर आपका concentration बहुत ज़्यादा है एक side पे, ठीक है, so if you have number of molecules, for example take a example of 100 molecules, you have 100 molecules of aspirin at one side of plasma membrane and you have only 10 carriers, so the 10 carriers will be saturated. So doesn't so if there is a concentration gradient, high difference in the concentration gradient, but still because you have limited carriers, so the process is saturable. That's why. Next one was a factors affecting on the absorption. So there are different factors that affect the absorption. So if you want to read, you can read from books, but I will just tell you in a quickly manner. So first one is the dosage form. Factor is the dosage form. So dosage form will also affect the absorption. So the nature of dosage form, for example, if it is a tablet, if it is syrup or suspension emulsion, obviously the liquid dosage forms will be absorbed very fast than solid dosage form. In solid dosage form also there are different kinds: film coated, entry coated, right? So sustained release. So uncoated tablet will be dissolved fast. Then after that film coated, after that sustained release, after that sugar coated. So likewise, so dosage form will also affect the absorption. So depending on dosage form, absorption will be there. Okay. So that is known as a formulation factor. Okay. Then solidity of drug. So if drug is a more lipid soluble, absorption will be faster. Okay. And if it is a water soluble but having low molecular weight, then again it will be absorbed. pH and ionization we have seen. Unionized fraction of drug is better absorbed because it is a lipid soluble. Then presence of other drug. So if you use concurrent use of drugs, that may affect the absorption process. अगर दो ड्रग साथ में लिए तो absorption उनका alter हो सकता है. For example, if you take a tetracyclines and if you take a antacids together, so tetracycline will bound to will form a complexes with that antacid and it will not be absorbed. So likewise likewise फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जैसे सिप्रोफ्लोक्सिन, नॉरफ्लोक्सिन, सो उनके साथ में भी अगर एंटासिड लिया तो एंटासिड क्या करता है एक में के साथ उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है स्टमक में या इंटेस्टाइन में और वो कॉम्प्लेक्स एब्सॉर्ब नहीं होता. दैट्स व्हाई द प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग विल आल्सो इंप्रूव द एब्सॉर्प्शन. देन जीआईटी मोटिलिटी. आपके जीआई की मोटिलिटी कैसी है? सो इफ योर मोटिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड, okay, suppose that you are suffering from diarrhea or vomiting, so in that case absorption of drug will be less. Okay. And suppose that you are suffering from constipation, ठीक है, आपका जीआईटी का मूवमेंट कम है, तो इन दैट केस ड्रग एब्सॉर्प्शन विल बी फास्टर. सो जीआईटी मोटिलिटी विल अफेक्ट द ड्रग एब्सॉर्प्शन. देन अगेन presence of food. So next, presence of food. So some fatty diet will absorb presence of fatty diet जैसे चीज बटर वगैरह. So presence of fatty diet will increase the absorption of few drugs and decrease the absorption of few drugs. So presence of food will also alter the absorption. Then disease. So if you are suffering from any disease of GIT, so that will also again affect the absorption. अगर आपके स्टमक का या फिर इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट रिमूव किया है, so that will all again affect the absorption. Then vascularity. Blood network of blood vessel supplied to the area for absorption or area tissue responsible for the absorption. अगर जो absorption जहाँ से हो रहा है वहाँ पे अगर blood vessel का network ज़्यादा है, so there will be more absorption. So metabolism. Okay. So less will be the first pass effect, more will be the absorption. More will be the first pass effect, less will be the absorption. So again area of absorbing tissue. Okay. Suppose you have large surface area in the small intestine. Okay. Small intestine you have large surface area. That's why most of the drug absorb from small intestine. So surface area is directly proportional to the absorption. Then particle size is directly proportional. Decrease in the particle size will increase the absorption. A drug must be disintegrate. A drug must be dissolved in the GIT fluid for the absorption. Okay. So this was the factors affecting on absorption. We have seen already this, but just want to repeat because there was a not recorded. Then first pass effect. This is important. Okay. So whatever drug you are consuming orally. Okay. मान लीजिए suppose you have taken one tablet through oral route, it will go in stomach, disintegrate, dissolution will be there, and after that it will be absorbed. But you are not taking only tablet, so you are eating your food also. So you are eating your food also, meal also. So in that meal you have different nutrition, carbohydrate, proteins, lipid, vitamins. Okay. So along with this, your drug is there. Okay.
Along with these nutrient, your drug is absorbed in the stomach or intestine. Okay. Now your stomach and intestine is provided with a large number of कैपिलरी नेटवर्क और ब्लड वेसल नेटवर्क. वहाँ पे जीआईटी के एरिया में बहुत सारा ब्लड का नेटवर्क होता है, कैपिलरी होता है. एंड ऑल द ब्लड फ्रॉम योर जीआईटी एरिया मतलब किचन एरिया, वहाँ पे आपका क्या है, डाइजेशन होके जो भी न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब होने वाला है ब्लड में, सो दैट विल बी कैरिड टू ए लिवर. Okay, for the metabolism, because liver is a metabolic factory of your body. Okay, so that's why most of the blood from GIT area that is carried to a liver. Okay, now what happens in that blood, you have your drug also, you have nutrition also. So along with other nutrient, your drug goes to liver, and in the liver there is a partly a metabolism of your drug, not a full. Okay, so there is a partly, or some part of drug will be metabolized in the liver before reaching to a systemic circulation, and this is known as a first pass effect. So when drug is given orally, after its absorption from GIT, the most of the blood from GIT is carried to a liver by a portal vein. Here some amount of drug will be metabolized, or some part of drug will be metabolized before showing its pharmacological action, and this metabolism is nothing but the first pass metabolism or first pass effect, or it is also known as pre-systemic metabolism. Okay, so this is very important. Okay, so first pass effect will decrease the bioavailability of drug. जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा, कौन, फर्स्ट पास इफेक्ट. सो दोज ड्रग विच विल go more first pass effect, those drug which will show more first pass effect, they will have less bioavailability. ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर जो यहाँ से डाइजेशन होके जो एब्सॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, ड्रग्स का, ठीक है, तो वहां से ब्लड आपका लिवर में जाएगा. लिवर में क्या होता है, उसका कुछ हद तक मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग विल बी डिक्रीज्ड if drug is going on first pass metabolism. First pass effect are an important determinant for the bioavailability. So more is the absorption, more will be the bioavailability. Less will be the first pass effect, more will be the bioavailability. For a drug to be bioavailable, it should undergo less first pass effect. Remember. Now we'll see the example of drug which undergo first pass effect, or which will show first pass effect. Okay, here are the table. These are the list, or these are the summary of different drugs which will undergo first pass effect. Drug undergoing first pass effect. ठीक है, ये एग्जांपल है ड्रग की. अभी कोई ड्रग क्या है कि मतलब वो बहुत ही कम फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाता है, कोई ड्रग थोड़ा सा मीडियम दिखाता है, कोई ड्रग बहुत ही ज्यादा दिखाता है. सो ओके, सो दोज ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटॉन, फिनाइलब्यूटाजोन, टोल्बिटामाइड, पिंडोल, सो ड्रग्स लिस्टेड इन द कॉलम नंबर 1, they will undergo low first pass effect. Then drugs like aspirin, quinidine, desipramine, norepinephrine, or drugs listed in the second column, they will undergo intermediate first pass effect. Okay, drug listed in the column number 3 like isoprenaline, lidocaine, hydrocortisone, testosterone, they will undergo high first pass metabolism, and that's why they are not given by oral route. So they are given by पेरेंटल रूट. आइसोप्रेनालिन इंजेक्शन होता है, लिडोकेन का टॉपिकल यूज होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन होता है, बिकॉज दीज आर द ड्रग व्हिच विल शो हाई फर्स्ट पास इफेक्ट. ओके, अगर उनका सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आने से पहले ही अगर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा लिवर में, तो उनका यूज ही नहीं होगा ना. सो द ड्रग विल नॉट बी अवेलेबल फॉर biological action. So drug which are showing first pass effect, which are showing high first pass effect, they will not be available for the biological effect, or their bioavailability will be decreased. Drugs in the column number 4, propranolol, aprenolol, salbutamol, verapamil. So propranolol, aprenolol, salbutamol, verapamil. So these are the drug which will also go extensively on the first pass effect. ये भी इनका भी मेटाबॉलिज्म होता है फर्स्ट पास इफेक्ट में बहुत ज्यादा, but they are given orally, and that's why a high oral dose is required in case of propranolol, aprenolol, then salbutamol and verapamil, because they are showing first pass effect extensively. That's why their more dose is required. So उनका therapeutic dose ज्यादा देते हैं क्योंकि उनका first pass metabolism है. So these are the summary drugs undergoing the first pass effect. Okay, so ये GPAT के लिए important है आपकी. So we have seen this. Now next one is drug distribution. What do you mean by drug distribution? So after the absorption of drug, so drug moves in your body. Drug travels in your body in different compartment. Your body is made up of a different compartment. आपके body में different compartment है. जैसे for example आपका blood. So your blood is a one compartment. Your liver is another compartment. Your brain is another compartment. Your extracellular fluid is another compartment. Your interstitial fluid is another compartment.
So movement of drug in body's compartment or organs or tissue or at the site of action. So movement of drug within a body is nothing but the drug distribution. And again this distribution depends on the different factors, physico chemical properties of drug. ठीक है. So as like absorption, जितने भी absorption के लिए physical chemical properties responsible है और affect करते हैं, same in the similar manner for the distribution of drug, physicochemical properties of drug also. So lipid solubility, ionization, percentage ionization, weak acid, weak base. So there are certain barriers for distribution of drug. First one is a simple barrier of endothelial, simple capillary endothelial barrier. तो इसमें you can, your drug cannot go everywhere. So there are certain organs where there are the barriers. So there are two types of barrier proposed. ये theoretical basis है, just simple capillary barrier, simple capillary endothelial barrier and simple cell membrane barrier. So capillary barrier ऐसा कुछ होता नहीं है, it was just proposed. एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था कि दो टाइप के बैरियर हो सकते हैं बॉडी में, सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर एंड सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर. तो सेल मेम्ब्रेन बैरियर इज नथिंग बट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Distribution of drug in different compartment. So you have different compartment like total body waters, then extracellular space, intracellular space or intravascular space, then body fat and bones. So they are different compartment. So in case of total body water में कौन से drug distribute होते हैं? So drugs like small molecular weight drugs, water soluble molecules like alcohol, antipyrine. So antipyrine, alcohol and small water soluble drug, small molecular weight water soluble drug. So they are distributed in the total body water. याद रखो total body water में कौन होता है? Antipyrine and alcohol, and that's why this antipyrine is also used to measure the total body water because it is distributed in the body. Okay, it is distributed in the total body water. So this antipyrine is also used for a measurement of total body water. Like alcohol is also a water soluble molecule and it will distribute into total body water. Extracellular space. So drugs like mannitol, large molecular weight drugs, large molecular weight molecule, water soluble molecule, large molecular weight and water soluble molecule like mannitol, they will be distributed in the extracellular compartment or extracellular space. Now intravascular space means जो आपका सेल है, सेल के अंदर कौन जाएगा? So very large. Extravascular space means plasma आपका. Okay, so very large, strong, very large molecule, strong and protein bound molecules. For example, heparin. So heparin is mostly distributed only in a blood. It is present only in a blood. वो आपका किसी बाहर के टिश्यू में नहीं जाएगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा because it is a highly protein bound. 99% heparin is protein bound. So that's why it will distribute only intravascular space. Okay. Now then, body's fat. So lipid soluble drug will be distributed into body's fat. Okay, for example, DDT. It is a pesticide and it will be distributed into fat. Then thiopentone. Thiopentone is a lipid soluble drug, so it will distribute into fat. And fluoride, lead and fluoride like compounds or metals, they will be distributed into bone. ठीक है, अगर लीड का पॉइजनिंग, फ्लोराइड का पॉइजनिंग होगा है तो बोन्स में भी आपको उसका ट्रेसेस मिल जाएंगे because it is distributed in the bone. So this is again a question, important question for GPAT map. So fluoride and lead will be distributed into bones. Now there are different barriers for the distribution. ठीक है, so distribution means movement of drug into various body टिश्यूज, ऑर्गन्स और कंपार्टमेंट. ऐसा नहीं कि हर एक ड्रग किसी भी टिश्यू में जा सकता है, किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकता है. सो देर इज सम रेस्ट्रिक्शन, देर इज बैरियर्स प्रेजेंट ओवर द, देर इज अ बैरियर्स. ओके, जैसे होता है ना, पुलिस एक बैरिकेड लगा दी है आपको कि चेक करने के लिए कौन है, क्या है, कोई आतंकवादी तो नहीं. सो इन लाइकवाइज दैट योर बॉडी आल्सो हैज सर्टेन बैरियर्स. ओके, so each and every drug will not get entry into brain, each and every drug will not get entry into bones, each and every drug will not get entry into your eyes, retina, etc, etc. So there are certain barriers. Each and every drug will not get entry into fetus through placenta. So each and every body has its own barriers. So first one is your human body has a different barriers, and these barriers are preventing drug from distribution. ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रोक देंगे ये बैरियर्स. ठीक है, बोलेंगे नहीं तो हमारा नहीं, इधर मत चल निकल. सो ब्लड ब्रेन बैरियर. सो इट इज नथिंग बट द, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन. ब्रेन के ऊपर एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है. सो ब्रेन कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल ग्लियल सेल्स which are joined together by a continuous tight intercellular junction known as a blood brain barrier.
So this blood brain barrier will prevent entry of drug into the brain. Okay, but there are certain drugs which easily get entry into the blood, into the brain, because of their lipid solubility. This is the blood brain barrier. So blood brain barrier is present in the brain in every part except there are certain areas. For example, in case of area surrounding to pituitary gland, जहाँ पे pituitary gland है आपका वहाँ पे blood brain barrier absent है. एरिया पोस्टरमा वहाँ पे भी ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है. मीडियन हाइपोथैलेमिक इमिशंस वहाँ पे भी blood brain barrier absent. So there are certain areas where blood brain barrier is absent. So what is blood brain barrier? It is nothing but the tight junction of capillary network over the glial cell or endothelial cell of your brain. Lipid soluble drugs they used to easily get entry into the brain. Sedative, hypnotics, anticonvulsant, anesthetic drugs. So all these drugs are the lipid soluble. Sedative, hypnotic, anticonvulsant, anesthetic. So these drugs easily cross the blood-brain barrier due to their high lipid solubility. Okay, so you can see here or you can easily get entry. Lipid soluble drug को brain में जाते हैं because they are lipid soluble and membrane is also lipoidal in nature. That's why. So lipid soluble drug easily get entry into brain, but water soluble molecule will not get entry into brain. Okay, for example, there are certain antibiotics. Now this blood brain barrier कैन बी. ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है आपका ये नॉर्मली अगर नॉर्मल पर्सन है तो ये एंट्री नहीं देगा किसको. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन से. नाउ पेनिसिलिन विल नॉट गेट एंटर इनटू द ब्रेन नॉर्मली. अगर नॉर्मल इंसान में पेनिसिलिन देंगे तो वो ब्रेन में नहीं जाएगा बिकॉज देर इज द ब्लड ब्रेन बैरियर. बट नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस हो गया आपको. सो इन्फेक्शन ऑफ योर लेयर्स इन द ब्रेन. इन्फेक्शन अगर हो गया आपको ब्रेन के लेयर का. So in that case, blood-brain barrier becomes disrupted. Blood-brain barrier becomes weak. ठीक है. अगर इन्फेक्शन हो गया आपका मेनिंजिस में तो blood-brain barrier आपका क्या होगा वीक हो जाएगा. Okay. Because of that weakening of blood-brain barrier, now penicillin can get entry into your brain. So that's why normally penicillin will not get entry into your brain. But if you are suffering from meningitis, at that time penicillin will get entry into brain. Okay, so meningitis will weaken your blood brain barrier. Now if you want to deliver any specific water soluble molecule, high molecular weight water soluble molecule to your brain, now it is possible, but you have to use penetration enhancer. So for example, if you want to increase the permeation across the blood brain barrier, so you have to use penetration enhancer. DMSO, dimethyl sulfoxide, is used as a penetration enhancer. This was again a question in GPAT. DMSO is used as a penetration enhancer. Okay, which will disturb the blood brain barrier. Okay, then again mannitol is also there. Mannitol will cause disruption of blood brain barrier. Blood brain barrier को disturb करेगा कौन? ये mannitol. Then dihydropyrimidine redox system. ये भी system आपका it is also used as a carrier for certain drugs in the brain. Okay, so this is the blood brain barrier. Now another is the second blood CSF barrier. So it is a similar to your blood brain barrier. Okay, blood CSF barrier जो है आपके BPB की तरह ही होता है. ठीक है. So it is formed by capillary plexus of lateral third and fourth ventricle into capillary endothelium in the choroid plexus, which have an open junction or gaps. Blood CSF barrier is like a blood brain barrier. उसके जैसे ही होता है. Now next one is a blood placental barrier. So if someone is pregnant और उसके पेट में किसी लेडीज, if any lady is pregnant and he is carrying a fetus in his womb, in her womb, so that fetus and mother is connected by one connection known as a placenta. So fetus and mother is connected by placenta. Okay, now placenta will not let the entry of each and everything from mother. कि जो मदर है उसके ब्लड में जो भी मॉलिक्यूल्स ड्रग्स हुए तो सबको एंट्री नहीं देगा fetus के ब्लड में, because there exists a placental barrier. So placental barrier is present between maternal and fetal blood vessels. They are separated by tissue layer made up of a fetal trophoblast basement membrane like and endothelial placental barrier. So this is known as a placental barrier. कि जो प्लासेंटा होता है आपका, प्लासेंटा जो है that will not allow each and everything from mother's blood to the baby's blood. ठीक है. So that is known as a placental barrier.
because this is important. Why we are learning this? Because you see, if you know this drug can cross placental barrier, that means it can adversely affect your fetus. अगर आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हो और आपने कुछ ड्रग लिया, अगर आपको मालूम ही नहीं कि ये ड्रग प्लासेंटा क्रॉस करता है और आपके fetus को अफेक्ट करेगा, तो आपका fetus में तो डिफेक्ट हो जाएगा, आपके बच्चा मतलब मे बी मेंटल रिटार्डेशन होता, मतलब दिमाग कमजोर हो सकता है उसका, या फिर उसका कोई लिम्स absence हो सकते हैं. So absence of limbs may be there, teratogenicity. So you can get idea, you can easily prevent that teratogenicity by preventing the drugs in the first 3 trimester. कि पहले 3 महीने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको केयर करना है प्रेग्नेंट लेडीज का, क्योंकि ड्रग्स क्रॉस भी कर सकते हैं प्लासेंटल बैरियर. सो दिस इज प्लासेंटल बैरियर. सो अगेन यहाँ पे लिपिड soluble drugs which are having molecular weight less than 10,000 Dalton can cross the placental barrier. Ethanol, sulfonamides, barbiturates, anesthetic drugs, steroid, narcotic analgesic, anticonvulsant, and few antibiotics can cross the placental barrier by simple diffusion. So then nutrition from mother's blood to the fetus is carried by carrier mediated transport through a placenta. Immunoglobulins by endocytosis. Okay, and teratogenicity means what? Teratogenicity means a drug, if a drug is taken by a pregnant woman and it can affect the adversely to the your fetus, then it is known as a teratogenic. And teratogenicity, for example, a very famous example is there, thalidomide. Thalidomide it was a sedative drug. It was used in the 18th century, I think, or 19th century. So to prevent the motion sickness in the pregnant woman, कि जो प्रेग्नेंट वुमन में क्या होता है कि सुबह सुबह उनको उल्टी आती है, तो उल्टी या कम करने के लिए वो थैलिडोमाइड यूज किया था पहले. बट लेटर वन इट वाज ऑब्जर्व दैट थैलिडोमाइड क्रॉसेस द प्लासेंटल बैरियर एंड अफेक्ट द फीटस. वो थैलिडोमाइड ने क्या किया कि जो बच्चे पैदा हुए बाद में उनको किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, इससे पैदा हुए. Okay, so that is a teratogenicity. If drug is able to affect adversely to the fetus of pregnant woman, that is nothing but the teratogenic drug. So that is teratogenicity. And remember that thalidomide causes phocomelia. Phocomelia means absence of limb, absence of limbs. Okay, that is phocomelia means absence of limbs in the fetus. जो बच्चा है प्रेग्नेंट वुमन में के गर्भाशय में, उसको हाथ पैर ही नहीं आएगा. That is the absence of limb. That is known as a phocomelia. That is a teratogenic effect of your thalidomide, and only ES plus thalidomide उसका एक isomer होता है, that is having only teratogenicity. Now you can see here, so stages during which teratogen can show fetal abnormalities. जैसे pregnancy के different stages होते हैं, तो वो stages हैं. So first 2 week of pregnancy is responsible for the fertilization and implantation and fertilization stage. इन द फर्स्ट 2 weeks, पहले दो दो हफ्ते में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा वो एक का, एंड इम्प्लांटेशन होगा बच्चे का. ठीक है, तो उसमें अगर कोई ड्रग लिया तो दैट कैन कॉज मिस कैरेज. ओके, अगर दो से लेके 8 वीक तक, 2 to 8 weeks, so that is period of organogenesis. If any drug is consumed in this period, that can affect the fetus adversely. So fetus will get clipped plate, then optic atrophy, mental retardation, neural tube defect, etc. etc. So these are the just adverse effect of drug. So drug अगर 2 से 8 वीक में लिया, तो if a pregnant woman is if pregnancy is of 8 weeks and onward, so in that case if any teratogenic drug is taken, okay, so because this period is a period for growth and development, so drug can affect the development and functional abnormality of fetus. So actually we have seen this. I'm taking in a very fast manner because there was no recording of this. Now blood test is barrier. So each and everything whatever you are getting in the blood, आपने कोई ड्रग लिया तो वो ड्रग आपके टेस्टिस में नहीं जाएगा, because there is a blood testis barrier present. Okay, so it is made of a Sertoli cell junction. It is not a capillary barrier. It is not made up of a capillary barrier. It is made up of a Sertoli cell junction. It is a tight junction between two Sertoli cells and that act as a blood testis barrier. So अगर हर एक ड्रग अगर आपके टेस्टिस में एंट्री करेगा, so that can affect your sperm count. आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगी. Okay, that's why. So body has different barriers. भगवान ने सबको. Now distribution is a rate limited process. Distribution is a
permeability rate limited process in case of ionic polar water soluble drug. अगर आपका ड्रग वाटर soluble है, पोलर है या फिर आयनिक है, the drug distribution is a permeability rate limited. तो सबसे rate limited means anything, any process which is a very slow process, the slowest step or slowest process known as a rate limited. सो अगर आपका ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो सबसे स्लो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे स्लो प्रोसेस कौन सा होगा, परमेबिलिटी. अगर उसका परमेबिलिटी अच्छा है तो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर उसका परमेबिलिटी कम है तो लेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ permeability rate limited in case of if your drug is water soluble, ionic or polar in nature. Distribution is perfusion rate limited for highly lipophilic drug. अगर आपका ड्रग लिपोफिलिक है तो ऑब्वियसली उसका परमेबिलिटी का कोई चांस नहीं, वो परमिएबल है, वहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो डिस्ट्रीब्यूशन is perfusion rate limited in case of highly lipophilic drug. These two lines are very important. Okay, so already इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So drug distribution is a permeability rate limited in case of ionic, polar or soluble drugs, and drug distribution is a perfusion rate limited in case of highly lipophilic drug. Okay, now perfusion rate is nothing but the volume of blood that flow per unit per time, per unit per time per unit volume to the particular tissue. So that is nothing but the perfusion rate. मतलब blood flow कितना है उस tissue को, तो that is nothing but the perfusion rate. Okay, so volume of blood that flows per unit time per unit volume to the tissue, that is nothing but the perfusion rate. It is mentioned in the, it is given in the unit per ml, ml per minute per ml, and this was question in GPAT 2018, perfusion rate as it is. Next is volume of distribution. So volume of distribution means distribution of drug in different compartment. So it is a hypothetical volume of body fluids which into which drug is distributed or dissolved. Okay, so that is known as volume of distribution. Okay, so hypothetical volume of body fluids in which drug is dissolved or distribution, कि बॉडी के कौन से फ्लूइड में आपका ड्रग डिजोल्व हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो वॉल्यूम को बोलेंगे अपन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द particular compartment divided by its plasma drug concentration. And there is another term known as apparent volume of distribution. Apparent volume of distribution. Okay, so that is known as a amount of drug, total amount of drug in the body divided by plasma drug concentration. Apparent volume of distribution. The formula याद रखो, volume of distribution is equal to volume of distribution is equal to plasma amount of drug in the body divided by plasma drug concentration. Okay, now there are certain assumptions. So higher will be the volume of distribution, lower will be the plasma drug concentration, and vice versa. So if any drug has a higher volume of distribution, so that it will have a less plasma drug concentration. Okay, and if a drug has a low volume of distribution, it will have a more plasma drug concentration. Okay, for example, warfarin. So warfarin has a very low volume of distribution. Warfarin has a very low volume of distribution, and that's why it has a more plasma drug concentration. Okay, and for example, other drugs. Okay, so take an example of other rifampin. So it has a large volume of distribution. So plasma drug concentration will be less. So higher will be the volume of distribution, lower will be the plasma drug concentration, and vice versa. कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसका प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है, अदर देन प्लाज्मा. ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लो व्हेन हाई परसेंट ऑफ ड्रग इज बाउंड टू अ प्लाज्मा प्रोटीन. For example, warfarin. Warfarin is a drug anticoagulant which is 99% plasma protein bound. So it has a very low volume of distribution. Now, the relationship can be used for calculating the volume of distribution by using dose only. It is known as a, if you know the concentration, you can calculate the volume of distribution. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिया आपको, तो आपके बॉडी में टोटल पैरासीटामोल कितना गया, 500. और अगर आपको प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आपने चेक किया कि प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आ गया कि 100 मिलीग्राम पर ml पर लीटर, 100 mg पर लीटर. अगर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन आपका 100
मिलीग्राम पर लीटर है और आपको मालूम है टोटल ड्रग कितना डोज था 500, सो यू कैन इजीली टोटल ड्रग ऑफ इन द बॉडी 500 डिवाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कितना है अपना 100, ठीक है. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट 50 liters ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. टिश्यू बाइंडिंग एंड accumulation of drug with high volume of distribution value raises the possibility of displacement by other drug change in the pharmacological activity. क्या होता है कि अगर कोई ड्रग है जो बाउंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है आपकी, ठीक है, और दूसरा भी एक कोई ड्रग है सेम ड्रग बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन. दोनों भी ड्रग अगर एक ही प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं और दोनों साथ में अगर लेंगे आप, तो क्या होगा उसमें का जिसका स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है या फिर those drug which is having more affinity towards the plasma protein, so that will bind to plasma protein and another drug will be displaced, so that will give rise to pharmacokinetic interaction. Okay, we'll see it again later. Okay, those drug which bind selectively to plasma protein will have जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करते हैं ज्यादा, so they will less bound to other tissue or blood compartment like warfarin has a less apparent volume of distribution than true volume of distribution. Then drugs those which binds extracellular tissue, so they will bind less to plasma protein, for example chloroquine. Now different body tissues and their perfusion. So highly perfused कौन सा है, poorly perfused कौन सा. So highly perfused means these are the organs which will get highest blood flow. Highly perfused means they are getting higher amount of blood per unit over there, so they are getting high blood flow. Okay, so highly perfused कौन है, for example lungs, kidney, adrenal glands, liver, heart and brain. So these are the highly perfused organs. Out of these, lung is the highest perfused organ, remember. Lungs are the highest perfused organ, remember. Then kidney, then adrenal, then liver, heart and brain. Then moderately perfused, so skin and muscles, they are moderately perfused. And poorly perfused organ like fat means adipose tissue and bones, they are poorly perfused. Once there was a question, one of the following is a poorly perfused organ, कौन सा है आपका, bone and fat. हाईली perfused कौन है, lungs. So ये बाकी का जो है ये. Now next is fluid compartment of 70 kg adult. अगर कोई adult है 70 किलोग्राम वेट है उसका, तो उसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है. सो वेस्कुलर फ्लूइड ऑफ 70 किलोग्राम अडल्ट, ठीक है. नॉर्मल जो अडल्ट होते हैं 70 केजी के, उसमें फ्लूइड कंपार्टमेंट कितना अमाउंट होता है. वेस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा. वेस्कुलर फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा कितना होता है उसमें 6 लीटर्स, ठीक है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है 12 लीटर्स, ठीक है. इंट्रासेलुलर कितना होता है 24 लीटर्स. एंड टोटल बॉडी वाटर कितना होता है उसका 42 liters. Next one is a marker used to measure the volume of real physiological compartment. कि यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मा कितना है 6 लीटर, लेकिन किसने देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा नहीं. आपने मेजर किया है नहीं, लेकिन किसी ना किसी ने तो मेजर किया है ना. बट मेजर कैसे किया. सो they are used markers. They use markers to measure the different volume of different body fluid. Volume of different. आपकी बॉडी में प्लाज्मा कितना है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, ये मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मार्कर्स. नाउ मार्कर्स यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेजर अ प्लाज्मा, so there are certain markers like Evans blue, endocrine green, iodine 131 and albumin. So these are the markers used for measurement of plasma. These markers are very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको अभी भी आ सकते हैं, ठीक है. Now if you want to measure erythrocytes, volume of erythrocyte, then chromium 51 is used as a volume. It is used for the measurement of erythrocyte. Now if you want to measure extracellular fluid, then you can use a marker like non-metabolizable saccharides like raffinose, then inulin, then mannitol, then radioisotopes and selected ions like sodium, bromine, iodine and sulfate. So these are distributed mostly in the extracellular fluid. So these can be used for the measurement of extracellular fluid. So जैसे Evans blue, indocyanine green, iodine 131, albumin, ये क्या है, ये distribute होते हैं आपके प्लाज्मा में. So these can be used as a marker for measuring the plasma. Chromium 51 for erythrocyte. These are for extracellular fluid. Okay. Now if you want to measure total body water, body में आपके
वाटर कितना है मेजर करना है तो यू कैन यूज दिस ड्यूटेरिएटेड वाटर, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरिएटेड वाटर, H2O की जगह D2O है, ठीक है. सो इट इज नोन एज हेवी वाटर. एंड ट्रिटिएटेड वाटर और H3O, HTO, ठीक है. देन एंटीपायरिन. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. एंटीपायरिन इज अ used for the measurement of total body water. Okay, the phenomenon of complex formation with the protein of drug is known as a protein binding. So phenomenon or the process of formation of complex of a drug with protein is known as a protein binding. अगर आपका ड्रग एब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड में जो डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसको अगर बाइंड करता है, उसको अगर उसके साथ में अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो दैट इज नोन एज अ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. So formation of complex of drug with plasma protein, that is known as the protein binding of drug. Okay, so intracellular binding or primary receptor. Intracellular binding is known as the primary receptor for the drug and extracellular binding or secondary receptor or silent receptor. मतलब अगर ब्लड में के जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको बाइंड करता है इरिथ्रोसाइट्स के, जो आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसको बाइंड करते हैं उसको बोलेंगे प्राइमरी रिसेप्टर्स. एंड अगर बाकी दूसरे को बोलते हैं उसको बोलेंगे सेकेंडरी. एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी और साइलेंट. ये ऐसा कुछ टर्म्स होते नहीं, दैट इज ओनली रिलेटेड विद द प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है. Then types of binding. So there are two types of protein binding, reversible and irreversible. Okay, reversible means ड्रग आपको प्रोटीन बाउंड करेगा और बाद में डिटैच भी होगा. ड्रग will bind to a plasma protein and it is can be detachable. That it is can be detachable. That is known as a reversible. Okay, प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो बाद में टूट भी सकता है, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल. Okay, so most common and generally reversible in the following process are involved. So in case of reversible protein binding, what are the different types of bond involved in the protein and your drug molecule? So hydrogen bond, hydrophobic bonds, ionic bonds or interaction, then van der Waals forces. So these are the four types of bond that are formed in the reversible drug protein complex. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, ionic interaction or ionic bond or van der Waals forces. So these are the reversible because these hydrogen bonds, hydrophobic interactions, ionic bonds and van der Waals forces, they are relatively weak. They are nothing but the weak bonds. So that's why this is a reversible protein binding. So reversible protein binding में ये सब bonds होते हैं. Irreversible protein binding में क्या होगा? There will be a covalent bonding between molecule and proteins. So irreversible बाइंडिंग होना नहीं चाहिए, रिवर्सिबल ही होना चाहिए. तो इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग फिनोमेनन इज रेयर एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज इन्वॉल्व. ओके, याद रखो, इंपॉर्टेंट है. सो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड इज इन्वॉल्व. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफॉर्म पैरासिटामोल मेटाबोलाइट टू द हिपेटोसाइट. फॉर एग्जांपल ये क्लोरोफॉर्म का मेटाबोलाइट्स और पैरासिटामोल का मेटाबोलाइट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं आपके hepatocytes की. So that is nothing but the binding. Okay, that is a covalent binding result in the necrosis. तो यहाँ पे याद रखो कि दो टाइप का प्रोटीन बाइंडिंग होता है आपका, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, आयनिक एंड वैन डर वाल्स प्रोसेस. रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, याद रखो. Now those drug which will bind selectively to a plasma protein will have less volume, less bind to a extracellular tissue. अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है तो बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू को बाउंड नहीं करेगा. ठीक है, अगर कोई ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू को बाइंड करता है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड नहीं करेगा. Different plasma proteins available for binding of various drug in the plasma. This chart is very important. Already they have asked the question on this. So protein, molecular weight and drugs bind. कौन से ड्रग बाउंड करते हैं उनको. ओके, सो इन द फर्स्ट कॉलम आई हैव मेंशन द नेम्स ऑफ प्रोटीन. इन द सेकंड कॉलम आई हैव मेंशन द molecular weight of the same, and third column is not much important. Fourth column, drug, example of drug that binds. So first column, human serum albumin. Okay, GPAT 20 में as it is question था, what is the molecular weight of human albumin? So it is a 65,000 Dalton. ह्यूमन अल्बुमिन विल हैव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 65,000 डेल्टा. इसके ऊपर जीपैट 20 में क्वेश्चन आ चुका है, पेपर चेक कर लो. ड्रग्स, लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रग्स दे विल बाइंड टू ह्यूमन अल्बुमिन. बेसिकली जो एसिडिक ड्रग होते हैं, वीक एसिडिक, और एसिडिक ड्रग जो होते हैं, एसिडिक ड्रग दे विल बाइंड टू
ह्यूमन अल्बुमिन, एसिडिक जो ड्रग्स होते हैं, जो एसिडिक नेचर के होते हैं, सो एसिडिक नेचर ड्रग विल बाइंड टू अल्बुमिन. Then next one is alpha 1 acid glycoprotein. So it will have molecular weight of 4000 sorry 44,000 Dalton. Okay, so acid glycoprotein, alpha 1 acid glycoprotein. So which kind of drug? So basic drugs. Okay, यहाँ पे अल्बुमिन को कौन से बाइंड करेंगे? एसिडिक ड्रग, जैसे एस्पिरिन हो गया, आपका बार्बिचुरेट हो गया. ठीक है, so acidic drug will bind to albumin, basic drug will bind to acid 1 glycoprotein. Basic drugs like imipramine, lidocaine, quinidine, they will bind to alpha 1 acid glycoprotein. Then lipoprotein जो होते हैं आपके, जो there are certain lipoprotein in the plasma like high density, low density, very low density, etc. So they will have molecular weight ranging from 2 lakh to 3.4 lakh Dalton. So basic drugs और लिपोफिलिक ड्रग्स लाइक, सो ऑब्वियसली लिपोप्रोटीन में लिपिड ज्यादा रहेगा तो लिपोफिलिक ड्रग ही ज्यादा बाइंड करेंगे. ओके, सो बेसिक एंड लिपोफिलिक ड्रग लाइक क्लोरप्रोमेसिन दे विल बाइंड टू लिपोप्रोटीन. देन अल्फा 1 ग्लोबुलिन will have molecular weight of 59,000 Dalton. So steroid drugs like corticosterone, thyroxine and cyanocobalamin. So these kind of drug will bind to alpha 1 globulin. So there was one question. So steroidal drug mostly used to bind with one of the following protein. So alpha 1 globulin. So steroid जो होते हैं वो globulin को bind करते हैं, along with thyroxine, cyanocobalamin भी bind करता है. Then next is alpha 2 globulin. So it will have molecular weight of 1,34,000 Dalton. Alpha 2 globulin. So this is a जो फैट soluble विटामिन होते हैं, so vitamins like A, D, E, K and cupric iron, so they will bind to alpha 2 globulin. Okay, then hemoglobin has a molecular weight of 64.5 thousand Dalton. So phenytoin, phenobarbital and phenothiazine, they will bind to hemoglobin. See this this albumin is known as a warfarin binding site because warfarin is acidic drug, it binds to albumin. This alpha 1 acid glycoprotein is known as a lidocaine binding site. Then this alpha 1 globulin is known as a steroidal binding site. This alpha 2 globulin is known as a fat soluble vitamin binding site. We will see it again. तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, प्रोटीन्स, नेम ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड कौन से ड्रग उसको बाइंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टेबल है. डिफरेंट ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग साइट, डिफरेंट अल्बुमिन बाइंडिंग साइट फॉर ड्रग्स, कौन से ड्रग कौन से साइट को बाइंड करेंगे. ओके, सो डिफरेंट ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग साइट, डिफरेंट ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग साइट, प्रोटीन कौन सा, यहाँ पे अल्बुमिन है. सो डिफरेंट ड्रग अल्बुमिन बाइंडिंग साइट, कौन से ड्रग कहाँ पे बाइंड करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जीपैट नाइपर के लिए, सबके लिए क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं इसके ऊपर. सो साइट फर्स्ट इज नोन एज अ वारफेरिन बाइंडिंग साइट एंड एज अ प्रोपेजोन बाइंडिंग साइट. साइट फर्स्ट इज नोन एज अ, ये एज इट इज, आपको याद रखना है. आप बोलेंगे कहाँ पे साइट, दिख तो नहीं रहा, ये दिख तो थोड़ी है, आपकी आंखों से नहीं दिखेगा. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है आंखों से दिखता है, आपको नहीं. सो प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस पे ड्रग्स बाइंड करते हैं. ठीक है, so that particular amino acid sequence is known as a site. Okay, so एक particular amino acid sequence होगा वहाँ पे warfarin bind करेगा, तो उसको बोलेंगे warfarin binding site और site 1. So site 1 is known as warfarin binding site and as a propiazone binding site. Site first is known as warfarin binding site or as a propiazone binding site. So okay, so it represent the region where large number of drug bonds. ठीक है, ये साइट फर्स्ट पे वैरायटी ऑफ ड्रग दे यूज्ड टू बाइंड एट अ साइट 1. ओके, सो साइट 1 इज मोस्टली नोन एज अ वारफेरिन बाइंडिंग साइट. यहाँ पे कौन से ड्रग बाइंड होंगे, सेवरल एनएसएआईडी, सेवरल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे फिनाइलबिडाजोल वगैरह वाले, फिनाइलबिडाजोल, नेप्रोक्सेन, इंडोमिथासिन, दे विल बाइंड टू वारफेरिन बाइंडिंग साइट. Sulfonamides like sulfadoximethazine, sulfamethizole, phenytoin, sodium valproate, bilirubin. So these drug will bind to a site first of albumin and site first is known as a warfarin binding site. अगर मान लीजिए कि वारफेरिन और अपने फिनाइलबिडाजोल या फिर कोई भी ड्रग इसमें का, वारफेरिन और ये इसमें कोई भी ड्रग साथ में लिया आपने, तो क्या होगा, जो एल्बुमिन है उसकी बाइंडिंग साइट पे दोनों भी जाएंगे, वारफेरिन भी जाएगा और ये फिनिटोइन भी जाएगा. ठीक है, तो दोनों वहां पे जाएंगे, दोनों भी बाइंड करने का ट्राई करेंगे. लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 1 आवर हो गया कि वारफेरिन का टैबलेट ले लिया. ठीक है, अभी जस्ट एब्सॉर्प्शन होके आपका वारफेरिन ब्लड में गया है,
और जाके वो बाउंड किया प्लाज्मा प्रोटीन को, ठीक है। और इमीडिएटली आपने क्या किया कि फिनिटोइन भी ले लिया, तो फिनिटोइन भी जाएगा ब्लड में और वो भी वहाँ पे बाइंडिंग साइट पे जाएगा। नाउ योर फिनिटोइन हैज अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द अल्बुमिन, फिनिटोइन का ज़्यादा एफिनिटी, ज़्यादा प्यार है अल्बुमिन के साथ, तो फिनिटोइन तो जल्दी जाके वहाँ पे अटक जाएगा। लेकिन वही साइड पे ऑलरेडी आपका क्या है, वारफेरिन है, तो वारफेरिन क्या होगा, वहाँ से डिटैच हो जाएगा। So if you use concurrently two drugs binding on the same site of plasma protein, that result in the displacement pharmacokinetic type of drug interaction. So phenytoin will displace the warfarin from protein binding site, and there will be sudden rise of warfarin concentration in your blood that will leads to bleeding. warfarin क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट का अगर सडनली आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग इज नॉट बायोलॉजिकली फ्री, जो बाउंड हो गया प्लाज्मा प्रोटीन को वो बायोलॉजिकली एक्शन दिखाने के लिए फ्री नहीं है, जैसे फ्री होगा वैसे ही वो एक्शन दिखाएगा, ठीक है। सो सडनली फिनिटोइन एंड अदर दीज ड्रग्स जितने भी लिस्ट किए, सो दे विल यूज टू डिस्प्लेस द वारफेरिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, एंड दैट रिजल्ट इन द increased level of your warfarin and bleeding. Okay, so that is known as a displacement type of drug interaction. Okay, so it is important for GPAC. Now site second is known as a diazepam binding site. So site second है that is known as a diazepam binding site. ओके, साइड सेकंड जो है उसको बोलते हैं डायजेपम बाइंडिंग साइट। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, साइड फर्स्ट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग इज नोन एज, साइड सेकंड इज आल्सो इज नोन एज। ओके, सो साइड सेकंड इज डायजेपम बाइंडिंग साइट वेयर डायजेपम यूज्ड टू बाइंड हियर टू द अल्बुमिन। जो एक अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा यहाँ पे जहाँ पे आपका डायजेपम बाइंडिंग करेगा, तो उसको बोलेंगे साइड सेकंड। साइड सेकंड इज डायजेपम बाइंडिंग साइट. So along with diazepam, other drugs also bind over here like ketoprofen, ibuprofen, tryptophan, clozapine, probenecid, medium chain fatty acids also binds. Okay, so if you take diazepam along with these drugs, there may be a displacement reactions. Okay, like site 3 is known as digoxin binding site. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So site 3 for albumin binding site 3 is also known as digoxin binding site. Site 4 is known as a tamoxifen binding site. Site 4 is known as tamoxifen binding site. These sites are very important. इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको पूछेंगे फाइंड द करेक्ट मैच। एक कॉलम में देंगे आपको साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, साइट 5, दूसरे कॉलम में देंगे आपको वारफेरिन बाइंडिंग साइट, डायजेपम बाइंडिंग साइट, डिगोक्सिन, tamoxifen बाइंडिंग साइट। So you have to find the correct match. So they can ask question like this. बाइंडिंग साइट फॉर ग्लोबुलिन, तो ये हो गया प्रोटीन अल्बुमिन के बारे में। So there are drugs which used to bind to globulin. So globulin binding site, it is again another important point. So alpha 1 globulin is also known as transcortin. Remember alpha 1 globulin जो है उसको transcortin भी बोलते हैं transcortin. Alpha 1 globulin is also known as transcortin, and as the cortin means corticosteroids. So that's why alpha 1 globulin is a binding site for your corticosteroids. So it is a corticosteroid binding and globulin, it is a corticosteroid binding globulin. So it is a binding site for corticosteroids. जो आपका डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, बीटामेथासोन है, ठीक है। So triamcinolone है. So these kind of drug will bind to alpha 1 globulin. It is known as transcortin. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. Alpha 2 globulin is known as ceruloplasmin. Alpha 2 globulin जो है उसको क्या बोलेंगे, ceruloplasmin. Alpha 2 globulin is also known as ceruloplasmin, and it is a binding site for fat soluble vitamins. जो ADE के विटामिन है आपका, क्यूप्रिक आयन होता है, वो सब बाइंड करेंगे अल्फा 2 ग्लोबुलिन को, बिकॉज इट इज नोन एज अल्फा 2 ग्लोबुलिन इज आल्सो नोन एज सेरुलोप्लाज्मिन। ये सिनोनिम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा है, फैट सोल्यूबल विटामिन विल बाइंड टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। सो उसमें ऑप्शन थे अल्बुमिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन। तो अल्फा 2 ग्लोबुलिन, beta 1 globulin is also known as transferrin, and beta 1 globulin is a binding site for ferrous ion. Ferrin मतलब ferrous. So ferrous ion will bind to beta 1 globulin, that is known as a transferrin. Okay, now next one is alpha 2 globulin. It is a binding site for carotenoids. जो आपका carotenoids होता है, बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन जो भी है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 2 ग्लोबुलिन is known as a carotenoids, binding site for carotenoids. Next one is a gamma globulins, स्पेशली बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन। जो भी एंटीजन होते हैं, जैसे आपके कोरोना वायरस का एंटीजन है, वो बाइंड का, आप कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया आपको,
तो उसके ऊपर का जो एंटीजन है वो बाइंड करेगा आपको गामा ग्लोबुलिन को. सो इट इज नोन एज एंटीजन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट. सो दीज बाइंडिंग साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आता है. नाउ द ऑर्डर ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू. ये हो गया आपका वेस्कुलर 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 कंपोनेंट. ब्लड सेल है उसके अंदर ये प्रोटीन होते हैं ना. जैसे आपका ब्लड है, ब्लड में प्रोटीन होते हैं. सो ब्लड प्रोटीन जो होते हैं उसको बोलते हैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट. और जो बाकी के जैसे टिश्यू है आपका लिवर, किडनी, लंग्स, मसल, एडिपोज टिश्यू वगैरह, एड्रेनल ग्लैंड्स में, सो दोज आर नोन एज एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू. सो ड्रग्स binds to plasma proteins also, and drugs binds to extravascular tissue also. So the order of binding of drugs to the extravascular tissue. So mostly drug will bind to liver because liver will metabolize all the drug. So large number of drug used to bind to liver. Small number of drugs bind to lungs. Small number of drugs bind to kidney. After that, very small number of drugs bind to lungs, and after that, very few drugs bind to muscle. So ये GPAT 21 में क्वेश्चन एज इट इज आया था. So what is the correct order of drug binding to the extravascular tissue? ड्रग्स सबसे ज्यादा किसको बाउंड करता है या सबसे कम किसको बाउंड करता है एक्स्ट्रावेस्कुलर में. तो सबसे ज्यादा बाउंड करता है लिवर को, उसके बाद में करता है किडनी को, उसके बाद में लंग्स को, उसके बाद में मसल को. मतलब मसल को सबसे कम ड्रग्स बाउंड करते हैं. सबसे ज्यादा ड्रग किसको बाउंड करते हैं लिवर को, उसके बाद में किडनी आता है, उसके बाद में लंग्स आता है, उसके बाद में मसल आता है. तो सबसे कम मसल को बाउंड करते हैं. ठीक है. तो दिस वाज क्वेश्चन इन जीपीएट 21. यू कैन चेक द पेपर. Then next part, significance of protein binding. So what is significance of protein binding? So protein binding will increase the absorption. कैसे explain करता हूँ. So increase the absorption will be there if a drug is able to bind the plasma protein. So there will be increased absorption. तो मान लीजिए आपने ड्रग लिया, टैबलेट लिया. So it is now in a your GIT lumen. GIT का एरिया में now few part of drug is absorbed in the blood. ब्लड में एब्सॉर्ब हो गया. ब्लड में एब्सॉर्ब होके अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड नहीं करता है तो एक टाइम आएगा कि जीआईटी में जो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का है और ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का है तो वो सेम हो जाएगा. तो उस टाइम पे प्रोसेस एब्सॉर्प्शन का स्टॉप हो जाएगा. सो इन दैट केस नाउ सपोज दैट एब्सॉर्ब ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, देन बाउंड ड्रग इज नॉट अ फ्री ड्रग. ओके. सो बॉडी विल नॉट कंसिडर इट एज अ ड्रग इफ इट इज इन बाउंड फॉर्म. So एक साइड पे आपका ड्रग ही नहीं, so concentration gradient will be increased over there. So if drug bound to plasma protein, concentration gradient will be there, high concentration gradient, and it will assist the absorption. That's why protein binding will increase the absorption. Protein binding will decrease the volume of distribution. ठीक है. So whatever drug is distributed, that should be in a free form. So if it is a bound to plasma protein, that it does not distribute. So decrease the volume of distribution. So plasma protein of drug will increase the absorption, will decrease the volume of distribution, then it will prolong the duration of action, decrease the metabolism and elimination and drug. Okay. देखो absorption इंक्रीज होगा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन. ठीक है. मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन बाउंड है ड्रग आपका. So drug is bound to plasma protein, so it will detach slowly. The duration of action will be increased. So prolongation of action will be there. Now if drug is bound to plasma protein, so it is not a free, so it is not available for metabolism also, it is not available for elimination. So decreased metabolism and elimination. So drugs with low volume of distribution will be easily dialyzed, and drug with a high volume of distribution are dialysis is not effective. So जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मतलब जो ड्रग आपके ब्लड में ही रहता है, तो उसका डायलिसिस कर सकते हो आप. अगर आपका ड्रग ब्लड में नहीं है, आपके बोन्स में जाके बैठा है, आपका एडिपोज टिश्यू में जाके बैठा है, तो डायलिसिस क्या करेंगे आप. तो दोज ड्रग विच हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायलिसिस इज इनइफेक्टिव इन दैट केस. एंड दोज ड्रग विच हैव स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायलिसिस इफेक्टिव. तो अगर आपको वारफेरिन का ओवरडोज हो गया तो आप डायलिसिस कर सकते हो. लेकिन अगर आपका क्लोरोक्विन का ओवरडोज हो गया तो डायलिसिस नहीं कर सकते हो, कि क्लोरोक्विन हैज अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. नाउ नेक्स्ट, comparison between plasma protein binding and tissue protein binding. Okay, so plasma protein binding involves weak bonds and thus reversible. So most of the time plasma protein binding is reversible. Tissue binding, drug tissue binding, so binding generally involves strong covalent bond and thus irreversible. So most of the time
Plasma protein binding of drug is reversible. Tissue protein binding of drug is irreversible. Drugs that bind to a plasma protein have a small apparent volume of distribution. So apparent volume of distribution जो है जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करते हैं उसका कम होता है. Those drug which bind to extracellular tissue they have a very large apparent volume of distribution. ठीक है. Half life of plasma bound drug is a very short. ठीक है. Half life of extravascular bound drug is very long. Okay. So drug protein binding does not result in toxicity. Tissue toxicity is common. Displacement from binding site is a rare. Possible binding site is a possible by other drug. कि जो मैंने बोला है आपको, अगर सेम साइट पे बाइंडिंग करता है तो डिपेंड ऑन एफिनिटी, सो देयर विल बी displacement of drug. Displacement by other drug generally does not occur because there are very few limited drugs which used to bound to tissue. जो टिश्यू को बाउंड करते हैं देयर आर डिफरेंट साइट आल्सो. कंपटीशन बिटवीन ड्रग्स एंड बाइंडिंग साइट टू प्लाज्मा प्रोटीन कैन ऑकर between the drugs. So tissue binding drugs generally non-competitive. So